थोड़ा सा मालूम चला है। ओके, गुड गुड। ठीक है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल जो बिहेवियर है, उसको ज्यादा आप ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने अपने आप को देख के। ओके, द अदर संजय, लेट्स गो टू संजय कुशवा। Hello, sir. Am I audible? हाँ जी, यस। Yeah. So, like, uh, 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 ये वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड की और उसके बाद मैंने uh, मार्केट में भी काफी प्रैक्टिस की थी। तो वहां से एक चीज मैंने नोटिस की कि मोस्टली जो मार्केट में शॉपकीपर थे, मोस्टली सपोर्टिव थे। जैसे मैं गया तो स्टार्टिंग में मुझे फियर हुआ कि अगर मैं इस वर्ड पे ब्लॉक हुआ तो क्या होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने इजी वर्ड पे बाउंस किया, मैं कंफर्टेबल था। फिर मैंने सोचा नहीं, वो अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ, अब मैं थोड़ा हार्ड वर्ड पे ट्राई करता हूँ। मैं गया और जैसे हार्ड वर्ड मैंने बोलना चाहा तो मेरा फोकस उस पर चला गया कि ये क्या सोच रहा होगा। बट वो बोला वो कि कोई नहीं, आराम से बोलो। मीन्स उसका ऐसा नहीं था कि मजाक उड़ाने वाला, हंसने वाला, ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। वो रिलैक्स था, बोले ठीक है आराम से बोलो। फिर देन मैंने नोटिस किया, फिर मेरा फोकस अंदर आया। मैंने यहाँ गले पे फोकस किया, स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज किया। देन मैं उसे इजीली बोल पाया शब्द को। मीन्स पहली चीज मैंने ये नोटिस की कि मोस्टली लोग सपोर्टिव है, उन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टटर कर रहे हैं, सपोर्टिव है। सेकंड थिंग इज कि अगर फोकस हमारे अंदर होता है कि मैं मसल्स किस तरह मूवमेंट हो रही है, रिलैक्स हूँ या फिर नहीं, देन मैं इजिली प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। जैसे ऑफिस में मेरा फोकस थोड़ा लाइक टीम्स पे चला जाता है, जैसे जो मेरे कलीग्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो मेरा फोकस थोड़ा वहां डाइवर्ट हो जाता है, तो देन मैं वर्ड को रिप्लेस कर देता हूँ। बट अगर मैं मुझे एक्सेप्टेंस है और फोकस अंदर है, देन थोड़ा इजी होता है मुझे वर्ड को प्रोनाउंस करना। ये Okay. All right. Thank you, Sanjay. Let's go to Sagar. Uh, uh, Thank you, Dr. Amit, for giving me an opportunity to speak. Well, I have also tried number 1.2. I have shooted two videos. The first one was just a short introduction, and like Dr. Sachin set me to record one more video, like going outside in malls or any public place. So I made one of the food blog. I went to one of the shop and I made food blogging video. And I have noticed one thing: whenever I try to focus camera, so I stuck that I can say stuck on 10%, top 90% because Can you speak with the microphone near your mouth? Sagar, we can't hear yeah, you. sure. It's pretty turn on. Yeah, sorry. Is it now audible? Yeah, it's great. Yeah, so I was saying, whenever I go in public places and I just focus on the camera point, like means in my mobile, I just focus on my front camera and I don't look anywhere. I don't stutter because my focus is on the point, right? So Mhm. yeah, and I've noticed this one thing. I speak very good in public places as compared to those people who know that I stutter.
Uh, and one thing I have started to implement, react less whenever I stutter. Earlier, whenever I used to stutter, so I was uh, I was immediately breaking the eye contact, and I was stuttering more. But nowadays, I stutter, and I also do the voluntary stuttering in public, but I try to maintain my eye contact. तो this is what is very useful, right? कि आप लोग जो comment कर रहे हैं कि you're commenting on your overall communication skills. Some of you are focused almost exclusively on whether you're stammering or not, or how much stammering is occurring or whatever. If we think a little bit more broadly about communication skills, I think that is also another way of giving ourselves feedback. What was my eye contact? Did I pause appropriately so I could give the listener enough time to process what I'm trying to say? What is my body language? What is my tone of voice? So if you think more broadly about communication skills, जैसे कि टीसा में बोलते हैं, accept your stammering, but don't accept poor communication. I think it's useful to look at these videos that we are making more broadly in terms of a lot of other aspects. जैसे कि रजत है, जैसे जिस भी वीडियो में वो डालता है, he's always got a smile on his face. Very natural, right? Very natural smile. So the idea of focusing on more than one thing versus looking at a binary thing, कि whether I'm stammering or not stammering. In fact, one of the things that is actually very important is जब आप वीडियो बनाते हैं, किसी सोशल स्पेस में बनाते हैं, अपने हकलाहट को मत छुपाइए. The point is not to make videos of yourself that are in quotes clean. You want to be able to see yourself. अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कैसे हकलाता हूं, क्योंकि जब ये अवेयरनेस हो जाएगी और इसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, I think the reactivity in the experience will get lower. Visual feedback is very important in this process क्योंकि हमें we don't like how we look. Usually why we hesitate to stammer is not just because it interferes with communication, but also because we don't like the way we look. But if you look at yourself more broadly, कि मैं हकला रहा हूं, लेकिन मैं कंट्रोल से हकला रहा हूं, मैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट से हकला रहा हूं, मैं I'm stammering with a smile, I have my pausing intact. So हकलाहट तो होगी. That is part of what we do. We are people who stammer. We have a right to stammer. But the question is, are we also focusing on other aspects of communication? So I wanted to just get a pulse of the room. I also want to talk to some of the newer people who have joined TOPG for the first time. For example, Vinayak or Rusha, if you want to comment on what your process was, what you got out of it, in terms of the feedback on your introductory videos. Yeah. So in terms of the introduction videos, there were so many instances where I had done an introduction, but I was not able to record it. But there is a new kind of problem that I started to face from some days. Probably 2 or 3 days back. Probably 2 or 3 days back, I was at my relative's home, and they did not know that I stammer. So I just made up my mind that no matter what, I will speak up over there, and I did end up stammering a lot, but I did not feel bad during that time, and I did not feel bad for almost one whole day. But from the next day onwards, there was a lot of negative thoughts that started to come. Uh, like, uh,
like, should I have allowed myself to stammer so freely in front of them? Uh, like, my mind started to imagine that they were looking at me with uh, some feeling of you don't know, like they were feeling some kind of pittiness for me, like, oh, he stammers. So, like, wo what do you think may be the cause for this delayed reactivity? Well, it's going to be all over the place a little bit, Vinayak, because you're doing something new and you're going to feel empowered by it right afterwards, because obviously avoidance is not, over time, avoidance is going to erode our quality of life. If that wasn't the case, we wouldn't be here, right? So the idea is that avoidance behavior is a short-term gain for long-term pain. We trade short-term gain for long-term pain. There's a lot of problems with avoidance behavior long-term. So your body knows that and you want to talk. So you approach communication initially and felt empowered by that. The fact that you are able to stammer in front of somebody and you didn't feel bad about it, that's a positive thing. But you also, your body is also used to a very different response to the stammering experience. That's inevitable. It's going to come back. So there is a lot of reactivity in our experience that is in the body. Obviously, it's going to take some time, make more videos, come out more, self-disclose more. This is going to be a process. So what you are reporting to me, I'm seeing it as just very natural ups and downs. You felt empowered by the initial experience, and then your conditioned response to your stammering, which is so deeply housed in your body, came back. So you got to do it again and again and again and again. That's the only way to sort of experience stammering differently in the body. Just practice a very different set of behaviors that we've been practicing so long. So just a couple of, and I want to give one more. Anybody else wants to comment before we go on to something else? Isha, do you want to say anything? Yeah, I would like to say something. Sure. Okay, so as I have been also like speaking about this in my videos, like I am having job interviews right now. So like I have noticed that when I am making the videos, I am more secure because I know that I can, like I can sort of delete the video and like redo it once more. But like in real life, it's a bit more uh, difficult. So yeah, that's something I have noticed. And another thing is like the eye contact thing. I sort of tend to like act a bit unprofessional, if you can sort of call it. I don't know. It just might be my childishness which I have, which like everyone says that I do. But then again, I also feel like that it's me trying to cope, like trying to do something about my stutter. I don't know. I'm not sure, but yeah, that's something I've noticed. Your personality, your natural bubbliness comes through, your vivaciousness comes through in the videos that you're making. I think it's lovely. All of you look fantastic on camera. As far as I am concerned, all of you look fantastic on camera. Give yourself time, give yourself some compassion, give yourself some grace, and look for the kinds of things that are more broad. Don't just focus on the haklana. Focus on eye contact, focus on the pausing, focus on all these kinds of things, and that would be quite useful. We're going to up the challenge a little bit next week. I'm going to suggest 2 or 3 things that we do, continuing on with these introductory videos, but a higher level. I think it would be useful to make maybe 1 video each in the following situations. One is in reading. So practicing some reading. Second, storytelling, because there's a higher demand
cognitively, linguistically, there's a higher demand. जब भी हम कोई कहानी बता रहे हैं, जब हम किसी को कहानी अगर सुना रहे हैं, तो उसका इन बिटवीन होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है. उस चीज को कंपोज करने में और बताने में, डिलीवरी में, needs a different set of communication skills. So those are the two monologue situations. And the third situation that would be useful to make it is a conversation with somebody. Go back and forth with somebody, talk back and forth with somebody. The important thing is all three situations. Conversation definitely is going to be social. You're going to need a communication partner for that. But you don't need a communication partner for reading. And you don't need a communication partner for a storytelling. Now, storytelling could also be varied with the description of something. जैसे कि अंकित ने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बताया. That's fine. That is perfectly fine. Describe something, tell a story, basically extended monologue, 4 minutes or 5 minutes or so. Now, here's the important thing. Do this in a social space. If you're going to read, do it in a park or in a crowded place or somewhere where people can observe you, whether you so that you're within earshot. The importance of doing it socially is that stammering almost never shows up when we're by ourselves. So in a way, making introductory videos and give yourself positive feedback is a little bit also limiting, because it also gives us a sense that if we can do this in a private space, we can do this socially as well. But the body is different socially. So I would recommend that do all this stuff in a social way. Reading in a social space, either a description of an event or a story in a social space. And the third is have a conversation with somebody. Keep it no more than about 4 minutes, 5 minutes in length, because it's much easier for us, me and Dr. Sachin, to sort of watch shorter videos versus longer ones. Of course, we can watch longer ones too, but I think it's going to be a little bit more realistic if you keep it capped at about 5 minutes length. So we're going to continue on with this. And the next module, I wanted to preview a little bit before we go on to the next thing in the meeting here today. The next thing I want to preview a little bit is, what is your sense of voluntary stammering? What is the point, and what is your sense of it? Why do we do it? Why do we think it's useful? आपको क्या लगता है? Uh, If I, yeah, yeah, you may go. yeah. So it may be part of something like a reverse psychology, where you are trying to do the thing which you have been trying to avoid. So that may bring down fear. Trying to do things we've been trying to avoid. Yeah. So we talk about stammering as an approach avoidance conflict, right? We want to approach, but when we approach, we get zapped. So we avoid. So there's this choice between approach and avoid. Voluntary stammering is a way to approach the stammering experience a little bit differently. So that's from Vinayak. Let's go to Adhurima. You're on mute, Madhurima. Hello, sir. Yes. So my point is that this voluntary stammering actually helps in desensitizing our brain, that from childhood days we consider this stammering as a nightmare. Like whenever we talk and this stammering happens, we close our mouth and do not even try to tell what we needed to, and make an excuse and just flee.
So when we do this voluntary stammering, we are actually accepting this, that and since our childhood, our brain um, like has been programmed in that way that whenever we will get stuck, we have to flee. So this actually helps in changing that programming pattern of our brain. Yeah. Yes, sir. Yeah. That's Great. Great. Thank you for that. Thank you for that wonderful observation. You're basically stammering without the flight, fright, freeze responses that are so much baked into the stammering experience. Okay, great. Let's go to Ankit. Ankit, आपका क्या ख्याल है? Hello, sir. Hello. Good evening, everyone. सर, वैसे तो सारे पॉइंट रख ही दिए, मैंने भी यही सोचा था कि मतलब डर वाला, बट मैंने एक चीज और भी ऑब्जर्व की है कि बहुत बार मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं जाके टेक्निक का यूज करूंगा और अ, मैं वहां पे कंट्रोल्ड मैनर में बोलूंगा, बट बहुत बार क्या होता है कि आप अंदर से डर जाते हो, मतलब बहुत ज्यादा। आप एक चीज को जब बार बार सोच लेते हो तो स्पीच के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो 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 अगर आप वॉलेंट्री स्टटरिंग मतलब करोगे, जानबूझ के स्टटर करोगे, तो आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगी, तो जिससे क्या होगा कि आपको डर लगना कम होगा और आपका कंट्रोल हो जाएगा स्पीच के ऊपर, जिससे कि आप टेक्निक्स का भी यूज कर पाओगे अच्छे से। तो आई थिंक टेक्निक का यूज करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू। Excellent point. Excellent point. Let's go to Yatharth. Yeah, for me, voluntary stammering, what the advantage of voluntary stammering is that when we stammer, जब हम हकलाते हैं, स्टैमरिंग का कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, बट वॉलंटरी स्टैमरिंग में हकलाने के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो ये एक सेंस देता है कि हम लोग भी अपनी स्टैमरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि अदर वे राउंड। वॉलंटरी स्टैमरिंग इस चीज में बहुत हेल्पफुल रहता है। Okay, yeah. Okay, great. Thank you. Rusha? So this is basically like an extension of like what most people have said. So voluntary stammering is more like challenging the stigma. So like you are like, if society says that you can't stammer, you have to speak straight. So like by doing voluntary stammering, I'm saying that I don't have to speak like that, I have to speak by stammering. So like that sort of a thing. Yeah. So there's a notion in a lot of stuttering literature, we talk about role congruence versus role incongruence, कि जब हम जब हम अपना हकलाहट जब छिपाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो we are playing a role that is incongruent with who we really are. We are people who stammer, we are trying to pass as fluent. If I could take an expression from the LGBTQ community, we're trying to pass as fluent. So that is one of the reasons we feel shame, right? Because we have spent all this time, this mental energy, pretending to be people who don't stammer, and all of a sudden we stammer, we can't help it. It's an involuntary response, and then we blow our own cover.
And so we feel there's no real gray area in that situation. You're either a person who stammers or you're a person who's fluent and your secret is out. So in a way, I think what Rusha is saying in terms of challenging the stigma in society, it's creating an identity for yourself that is congruent with who you really are. That's part of the role congruence. Yeah, Rusha? Yeah, so it's like, since you mentioned like queer theory, it's sort of like how Judith Butler said that gender is performance. So like fluent speech is also a performance, because we learn how to speak since we were kids. You can't say that children are straight speakers, right? Then they never do. That's right. Yeah. And I think I like the word, you use the word performance. I think there's a performative component to voluntary stammering as well, right? There has to be. You're doing something unusual. You're doing something that you don't usually do. So दो तीन और सवाल लेते हैं, दो तीन और common लेते हैं, then I'll move on to something else a little bit related to this. So संजय पे जाते हैं, then we'll go to Sanjay Ashwa. सर वैसे तो सबने बता ही दिया, वही मेरा पॉइंट था एक्सेप्टेंस का, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे क्या है सर, वॉवेल से वर्ड जो स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अदरक, अगरबत्ती। तो जैसे ही मैं उन्हें लेने जाता हूँ तो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है कि मैं हकला दूंगा, और वो रिएक्टिविटी चलती है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं अनार लेने गया और मैंने कोशिश की उसकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगा और मुस्कुराऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, आंखें नीची हो गई। मैंने बोल दिया कि मुझे स्टैमरिंग का इशू है। वो मुस्कुराया और बोला कि कुछ नहीं है। फिर मैं थोड़ी दूर गया और मुझे पनीर लेनी थी, और पनीर बोलते वक्त मुझे हकलाहट नहीं होती। वहां मैं उसकी आंखों में भी देख लिया, मुस्कुरा भी लिया, हालांकि इसका रिएक्शन थोड़ा अटपटा था। तो मुझे लगता है वॉलंटरी स्टैमरिंग से स्टैमरिंग के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तब जाके ही हम जहाँ हकलाते हैं वहाँ हम आंखों में आंखें डाल के और मुस्कुरा के बात कर पाएंगे। That's right. That's right. Thank you for saying that. Let's go to Sanjay Ashwa. Hello, sir. So, mm, 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 मेरा लाइक, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक जब मैं वॉलंटरी करता हूँ, देन मैं वॉलंटरी में लाइक मुझे इजी फील होता है। ठीक है, लाइक मैं स्टडी किया, इजी फील हो। बट वॉलंटरी करने के बाद भी मुझे लाइक ब्लॉक्स का डर होता है कि वॉलंटरी में मुझे ये फील होता है कि यस, कि कंट्रोल मेरे पास है, कि मैं ज्यादा अगला सकता हूँ या तो कम अगला सकता हूँ। बट जब ब्लॉक आता है तो स्टिल मेरे माइंड में रहता है, नहीं लाइक बोलूं या फिर नहीं बोलूं। उस टाइम मेरे पास कंट्रोल नहीं होता है कि बोल पाऊंगा या फिर नहीं। लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि उस पर लाइक उस डर पर किस तरह वर्क किया जाए। थैंक यू। So I wanted to go to this point now. Basically, Anjay ने जो point जो सवाल अभी पूछा, that's a natural lead in, natural sort of a follow up. We talked about a performative component to the voluntary stammering. In fact, there's a performative component to any technique that you use, whether it's bouncing or prolongation or anything else. And it's performance because we are doing novel behavior, right? We don't usually engage in this behavior. It's novel behavior. And novel behavior is very difficult in speech to sustain for a very long period of time because we use our speech to make meaning. We don't focus on the movement. And there's a natural trade-off cognitively between focusing on movement in an automatic task
and focusing on meaning, using the movement to make the meaning and then focusing on the movement while you're making the meaning. It's very difficult, very, very difficult thing to do. इसलिए performative उसको performance में देखना, उसके उस lens से देखना is actually very useful, because then you talk about closed-ended practice. Any performance is not open-ended, whether it's singing a song or a dance or a musical score or anything like it, it is time-bound. And what closed-ended practice does, basically short spurts of practice periodically, many times a day or in different environments or any number of times that you choose to do in a week, what it does is keeps us engaged in the behavior, keeps us focused on the behavior with the intention that we need to focus on the behavior, and keeps it manageable, keeps it, contained. So my recommendation to you would be practice some voluntary stammering in short spurts of time. Keep a timer, 60 seconds, 90 seconds, short periods of time, because if you keep it for too long, it's going to be difficult to sustain that behavior. You're going to lose focus. All of us do. All of us will lose focus. The intention also will not be there, will not be there in a serious way. So I wanted to show you this graph. I'm going to draw this in a very old school way. Y-axis, x-axis. Y-axis this is all a voluntary averaging graph. Y-axis and x-axis. Y-axis is basically whether it is light or it is tight. Light voluntary stammering looks like this, feels like this. I'm inserting a couple of bounces, quick bounces every 3 or 4 words in my speech. Tight voluntary stammering is this, what I'm just doing right now, simulating for you. I can do it with eye contact, as in tight. I can do it tight. Obviously, the first one will normalize the conversation much more, right? So doing voluntary stammering with eye contact across this continuum, light to tight. On the x-axis, we got less frequent to more frequent. So it's a skill. Like anything else, this is a skill. And we can practice stammering in a light kind of a way with some frequency. We can do it more frequently, just like this, where every second word that I'm producing, with some light voluntary stammer. I can also go down in frequency a little bit. I'm still light, but I'm a little bit infrequent at this point in time. I can go up this continuum and keep it infrequent, as in tight. I can be here where it's tight in a more frequent kind of a way. So there's a whole variation to explore within this particular skill set to be learned. And the rationale, उसका जो purpose है, आप लोगों ने ठीक से बता दिया कि acceptance practice है. You can use it in as a substitute to self-disclosure. It is a way to, it gets at what is above the iceberg and below the iceberg, because हमारी emotional reactivity कम होगी जब हम, especially when we learn to stammer with a little bit more control. So I see voluntary stammering as a proxy, or a series of proxies for our natural stammer. Proxy को हिंदी में क्या बुलाते हैं? Representative, प्रतिनिधि. हमारी जो वॉलंटरी स्टैमरिंग है, हमारे असली स्टैमरिंग की प्रतिनिधि है. लेकिन हम कई टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग कर सकते हैं. तो कोशिश करते हैं इस कमरे में थोड़ा सा कुछ बात करते हैं. Let's practice a little light voluntary stammering. It's not happening a lot
it's not happening very frequently in my speech. I'm throwing in a couple of bounces every now and then, maybe every for 4 or 5 words, and I'm making full eye contact with you. I'm looking directly at the camera, and I'm keeping everything as natural as I possibly can. Now, can I keep this up all day? No, but I can keep it up for 60 seconds, right? And I can repeat it again for 60 seconds. एक environment में 60 seconds, एक और environment में 60 seconds, एक और environment में 60 seconds. And before I know it, over the course of the week, if I keep doing this on a regular basis, मेरी emotional reactivity कम होगी, and I will experience more control in my speech, which will give me confidence, and it will also carry me forward into the next week. So let's put people on a timer for a little bit. I'm going to set this timer for 60 seconds, and let's have a little conversation. Who wants to participate with me? Who wants to have a little conversation with me? Hindi, English, जो भी है. Rahul, ठीक है. Rahul से start करते हैं, then we'll move to Anjay. So Anjay, actually Rahul, तो आप मुझे कुछ बताइए अपने दिन के बारे में, जो कुछ भी बताना है, जो भी टॉपिक में बताना है, मैं आपको 60 सेकंड पे टाइमर में रखूंगा, और हम दोनों जो हैं बीच बीच में थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग ऐसे करेंगे. और अगर नकली स्टैमरिंग अगर असली हो गई तो हो गई, वो भी होगा. That will also happen. Fake will turn real. That happens a lot because the body has all these procedural memories of how to speak, and they're all going to come up. So that's okay. Don't worry about that at all. But try as much as you can to keep it a little bit more control and a little bit more focus. So 60 seconds starting now. Rahul. आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी भी नहीं आ रही. सर हाँ, अब आपको सर आ रही है. जी तो मैं सर. आपका टाइमर फिर से सेट करता हूँ 1 मिनट के लिए. कुछ बताइए अपने बारे में, अपने दिन के बारे में, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है. लेकिन आप यहाँ रहेंगे, इस क्वाड्रेंट में रहेंगे. लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग करेंगे और 2-3 शब्दों में एक 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 स्टैमर इंसर्ट करेंगे. Whenever you're ready. रेडी सर. ठीक है. तो मैं आज मेरे बॉस ने मुझे मैंने उनको एक्सेप्टेंस पे ही मैंने उनको बताया था कि सर मुझे कि मैंने टीसा नाम का की संस्था है, उसको मैंने ज्वाइन किया है, पर उनको तो वो उस दिन से वो मुझे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. जब मैं बोलता हूँ तो मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं. तो अभी उन्होंने कुछ दिन से मुझे को कोशिश की है कि वो मुझे बोलता है कि मुझे उस व्यक्ति से बोलो कि मुझे इस बारे में बात करे, या उसमें तो मुझे तो समझ में आता है कि हाँ, उन्होंने मुझे जानबूझ करके वो कि देखना चाह रहे थे कि ये मतलब सही में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट भी लग रहा है, क्योंकि वो हर चीज को बार बार वो अपने वो एक्चुअली में काफी मेच्योर इधर आदमी, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि जिसको मैं हकलाते हुए इतने टाइम से देख रहा हूँ, वो इतना अच्छे ढंग से कम से कम हकलाता हुआ वो बात कर रहा है. तो अब जो है आज जो है मुझे आज मैं उनको कुछ किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर मैं उनको कुछ बता रहा था. तो आज मैंने फील किया कि मुझे कुछ
ज्यादा ही स्टेमिनिंग हो रही थी, पर अब मैं अपनी वॉइस को लेकर के मैं खुद को मैं कॉन्शियसली मैंने जब ध्यान मेरा गया ऐसे, अभी भी मेरा ध्यान उस पर जा रहा है, तो मैंने ये फील किया कि मेरी जो ब्रीथ का जो पैटर्न है वो मेरी जो साउंड को फॉलो न, नहीं कर रहा है। तो ये सब सारा जो मेरे साथ रहा है। और सॉरी सर, मैं ये सब चीजें जो जो डेली राइटिंग का जो गूगल पर दिया हो मैं उसको भी करना चाहता हूँ, पर हमेशा देर का कर देता हूँ सर। स्टैमरिंग का जो है वो वो उस पर भी है कि मैं नहीं लिख पाता, पर मैं फिर भी बीच बीच में लिख रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आपको, आपने जब आपने इनिशियली वॉलंटरी स्टैमरिंग की, कैसा लगा आपको? कोई ऑब्जर्वेशन है आपकी? सर एक्चुअली में मुझे मैंने सर वॉलंटरी स्टैमरिंग अभी जब मैंने आज एक्चुअल में ऐसे विकास रांगा सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जब उन्होंने लॉन्च होस्ट करने का दायित्व दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आप वॉलंटरी स्टैमरिंग, पर मुझे लगता था कि मैं तो हकलाहट को ठीक करने के लिए आया हूँ, मैं क्यों जान बूझ करके हकलाऊं मैं। तो मैंने बता मैंने कहा सर मैं स्लो स्पीकिंग और पाउज टेक्निक के लिए, फिर उन्होंने एक दो बार कहा भी कि आप लोग सभी जो टेक्निक है, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो स्लो स्पीकिंग और पॉज टेक्निक यूज करूंगा। पर आज जब मैंने सर किया इसको, तो मुझे वो जो सब जो कॉन्सेप्ट है ना आइसबर्ग वाला, अभी तक तो सर मैंने पढ़ा था, पर आज आज वो मुझे एक्चुअल में मुझे समझ में आया है कि वो आइसबर्ग वाला कॉन्सेप्ट है क्या वो। तो यस सर, तो अच्छा लगा सर इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। लेट्स गो टू सोनम। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। ओके, तो क्या करना है? मैं बस प्रैक्टिस करना चाहता था लोगों के साथ थोड़ी सी लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो वी कैन प्रैक्टिस टुगेदर इफ यू वांट। यस। ओके, तो थोड़ा सा हिंदी में बोलते हैं फिर। ओके, ठीक है। तो मैं 30 सेकंड के लिए अपना टाइमर लगाऊंगा, कुछ आपको थोड़ा सा मॉडल दूंगा वॉलंटरी स्टैमरिंग के करने का। मैंने ग्राफ में दिखाया था कि लाइट भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, लेस फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं। तो मैं इस क्वाड्रेंट में रहूंगा, क्लोज टू जीरो। ओके। मैं लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग करूंगा, और हर एक 2-3 शब्दों के बाद मैं एक 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 इस टाइप की बाउंसिंग जो है मैं कर लूंगा। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जब हम बाउंसिंग भी कर रहे हैं वो भी एक टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग ही है ना। जब हम प्रोलोंगेशन भी कर रहे हैं वो भी एक टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग है। तो ये सारी जो टेक्निक जो है हमने सीखी हैं, जो टीसा में सीखी हैं, जब भी हम ब्रेक के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉमन इन ऑल आवर स्टैमरिंग एक्सपीरियंस। वी एक्सपीरियंस ब्रेक्स इन कॉन्टिन्यूटी। जो निरंतरता में हमें हमें ब्रेक लगती है, तो ब्रेक को रिटेन करना डिसेंसिटाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि हमारे स्पीच में ब्रेक्स होंगी, लेकिन किस टाइप की ब्रेक्स होंगी और कैसे हम उससे आगे बढ़ेंगे और कैसे में निकलेंगे, ये एक्सपीरियंस जो है ऑल्टर हो सकता है। इसलिए अगर लाइक फॉर एग्जांपल विद सोनम, लेट्स ट्राई आई ट्राई वॉलंटरी स्टैमरिंग फॉर 30 सेकेंड्स, राइट? सो मैं 30 सेकेंड पे के टाइमर पे लगाया मैंने, और मैं आपके साथ थोड़ी सी इस टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग करूंगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी स्पीच में जो वॉलंटरी स्टैमरिंग है वो काफी फ्रीक्वेंटली हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफी फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ। हर एक शब्द के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
काफी फ्रीक्वेंटली मैं कर रहा हूँ, मेरा टाइमर खत्म हो गया। तो आप मुझे कुछ बताइए अपने बारे में, एंड लेट्स ट्राई सम लाइट इनफ्रीक्वेंट वॉलंटरी स्टैमरिंग। ओके सर, मेरा नाम सोनम है, और मैं दिल्ली दिल्ली में रहती हूँ। और मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने कॉमर्स में किया है। और यहाँ और दिल्ली में ही मेरा कोचिंग सेंटर है, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्कूल स्कूल एंड ग्रेजुएशन। और मेरे फैमिली में वी आर हम 7 लोग हैं। तो हम यहाँ पे रहते हैं, और मुझे टीसा ज्वाइन करे हुए 2 साल होने वाले हैं। Okay, wonderful, wonderful, wonderful. Like anything else, it's a skill that we need to practice and skill we need to learn, right? So that's really what it is about. So, Agar? So, sir, can I also practice with you for 60 or 30 seconds of Sure, voluntary stretching? let's try it. You're on the timer. So, by the what's the topic? Anything you want to talk about. Anything you want to talk about, you can say it in these 60 seconds. I'll start your Okay. timer again because I took some time from you. Let's go. Whenever you're ready. Yeah. Well, my name is Sagar Motiwale, and I would like to share my daily schedule. I wake up in early morning. I start my day with meditation and some of breathing exercise, and then I go for my college, and I travel with train, and I make sure that I do daily tasks in train by speaking with people. I I often ask them about the places or where I have to go. Unfortunately, I know everything where I want to go, but still I try to ask them any question and to make the conversation as long as possible. Good. Awesome. That's a very good strategy. Talking to strangers, coming out of your avoidance mindset. Excellent. I think there's another question from Sonam, or a comment. So let's take that. सॉरी सर, एक्चुअली मैंने हाथ नीचे करना भूल गई, मुझे लगता है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। और कोई प्रैक्टिस करना चाहता है? Ankit, you had asked for feedback on your voluntary stammering that you did, right? जब आपने latest जो वीडियो डाला था, उसमें आपने Yes, sir. फीडबैक किया था कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अभी ट्राई करते Yes. हैं। इसको Okay. अगेन, आप यहाँ पे हैं, लाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहे हैं, और समवॉट विद सम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नेग्लिजिबल भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, somewhere in between. So maybe every 4 or 5 words, throw in a bounce or throw in a prolongation. Whenever you're ready, 60 seconds. Okay, okay, sir, मैं try करता Hmm. हूँ. So, अब अब मैंने एक यू 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 यूट्यूब चैनल शुरू किया है, डेली बिजनेस बज बज के नाम से। तो उस पर मैं न्यूज से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ।
तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड की वीडियो में 10 से 15 मिनट लग जाती थी। बट जैसे ही टाइम मैंने लगाया, मेरे को 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो अभी मैं 5 या 6 मिनट में बना लेता हूँ। तो अभी उससे मुझे कैमरा फे फे फेसिंग में भी थोड़ा सा कंफर्ट आया है, जो कि मुझे पह 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 पहले नहीं था। सो आई थिंक, थैंक यू। Okay, excellent, excellent. Very nicely done. Let me call on somebody else. Yeah, Athat. Yeah, sure. I would like to practice some voluntary stammering. So I will Excellent. just go through the schedule of my day. Okay. I wake 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 up at 8 o'clock, and then I go to the gym, and after that my office starts at around 11 o'clock, and after that I have my little lunch, and the office goes till 6 or 7 p.m. And after that I usually go out with my f- f- friends and spend some time with my family. And later at night I usually try to do my tasks of TISA, of TOPG, and watch some YouTube, or and use my phone of as a social media or something. And yeah, Mhm. usually I sleep after that. Yeah, Okay, thank you. wonderful. Do you feel some of your voluntaries turn real on you? Yeah, once or twice it went out of my hand, and it actually converted into proper stamping. Yeah, that's going to happen. Be prepared for it. So the idea of thinking that voluntary stammering voluntary ही रहेगी, नकली stammering नकली ही रहेगी, वो जरूरी नहीं है, वो असली भी काफी convert हो जाती है. So that is very expected. That is very, very normal. Our body has all these procedural memories of how to bring the words out, and it's going to override quite often the volitional, the voluntary part. That's why it needs to be done frequently. It needs to be done frequently across multiple environments. Let's give one more person a chance. और कोई one more person. Could be Rajat, could be Vikas, could be any of you. Rajat, do you want to try? आप try करना चाहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I can already see next week Rajat is going to put 10 videos on voluntary stammering in the YouTube channel. He drops 5 every day. Awesome. Keep going. तो सर मैं ऐसा करता हूँ, लाइट वॉलंटरी स्टमिंग एंड कम फ्रिक्वेंटली, मतलब वॉलंटरी बिल्कुल स्टमिंग, बिल्कुल. बाउंसिंग। Okay. तो सर मैं अपना कल का रोड विच बस स्टैंड का एक एक वाक्य से शेयर करना चाहता हूँ, कि वहां पर मैं गया, वो बस कंडक्टर मैम थी। तो मैंने उनसे लाइट
वॉलेंटरी स्टैमरिंग में पूछा कि मैम ब ब ब ब ब ब ब ब ब बयाना पूछ, अरे जल्दी बोल, उन्होंने मतलब ऐसा बोला बहुत फास्ट में, और 4-5 लोग थे आसपास। तो फिर उस मोमेंट पर मेरे को बैड फील हुआ उस क्षण। बट जो मेरे आसपास लोग थे उन्होंने एक हेल्प की, तो उन्होंने वापस से बोला, तो फिर बोला कि वो बस जा चुकी है। उसके बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि ये हमेशा होता था, होता है, और आगे भी हो हो सकता है। बट ये जो मौका मिला है वो इमोशनली टफनेस या इमोशनली रिएक्टिविटी को कम करने के लिए मैंने प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद मैंने 5-6 बसेज में प्रैक्टिस की था। सो ये मेरा एक छोटा सा वाक्य था सर। एक्सलेंट एक्सलेंट। तो हम लोगों की कंफर्ट जोन जो है बहुत ही अलग अलग है। इस रूम में रजत भी है, विकास भी है, काफी लोग हैं जिन्होंने काफी प्रैक्टिस की है, टीसा से काफी टाइम्स तक जुड़े हुए हैं। इस रूम में वो लोग भी हैं जो नए हैं, रुषा नए हैं, और some people are new. So I would recommend the following, guys. Let's do a little, and this is a homework for next week. You can write it down, and I think that would be helpful. Let's do a zoning exercise. Zoning में क्या होगा कि हम तीन 3 से 5 लोग और लोग या जगह, usually people and places. Let's identify 3 to 5 places that are easy for us, जहां पे challenge काफी कम है. It could be talking to your family members. It could be talking to a friend. It could be anybody. Try not to include a TISA member in this, because that is a whole other. I mean, that doesn't have to be that challenging, because we all know that we all stammer. So take somebody who's not a person who stammers in your high comfort zone. Then there is the mid comfort zone. These are places and people and places that are more challenging. इसमें ज्यादा challenge level है, और अभी हम feel नहीं करते कि हम कर सकते हैं. Or identify 3 to 5 places which are high level of challenge. So zone 1, zone 2, zone 3. और इस एक्सरसाइज का पॉइंट ये है कि जो भी हम टेक्निक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, वॉलंटरी स्टैमरिंग है, बाउंसिंग है, प्रोलॉन्गेशन है, जो भी टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें कम्युनिकेशन पार्टनर्स की जरूरत है. So what we are doing in this process is identifying communication partners that we can practice some different behaviors with. रजत का चैलेंज का लेवल और है. He's gone straight to social situations and talking to us, talking to people in the bus or stranger talk or whatever. तो आपका चैलेंज लेवल हायर होगा कि आपको नेक्स्ट चैलेंज किस में ट्राई करना है. Somebody like Rusha will have a challenge that is a little bit different because you're new to TISA, you're new to this entire process. So your comfort zones will be very different from his or our comfort zone. Each one of our comfort zones is going to be a little bit different. So identify these comfort zones. Talk a little bit about कि क्या है इन लोगों के साथ बात करने के लिए कि मेरा challenge कम है. Why is my challenge high in one situation? Why is my challenge medium in one situation? Why is my challenge low in another situation? That is part of becoming aware of our own internal experience with it. और इसको reflective journal में लिखिए. And that would be the basis for what we're going to be doing next. The other thing I would encourage you to do is, of the 3 situations that we are going to put some introductory videos in next week. For example, I told you, describe a situation, or describe an event, or tell a story or whatever it is. Do it with some voluntary stammering. Do these tasks with some voluntary stammering. Record yourself, watch yourself, and you will find that this is okay. The visual that you get is all right.
हमें इस टाइप का विजुअल फीडबैक बहुत नेसेसरी है, because we are often quite hesitant to watch ourselves on camera, quite hesitant to watch ourselves, stammer. So voluntary stammering करने से, control से करने में, record करने में, social situation में, you're basically creating a proxy. You're basically creating a proxy for your natural stammer. So let's try that next week. Okay, it's 11 o'clock. We had a couple of other things to do, but I don't think we have time for that right now. I would say keep the introductory videos going, up your level of challenge, and come up with a list of about 3 to 5 situations in the low, mid to high situation, and then we'll see where we go with it next week. Okay, thank you, Amit ji. You're welcome. You're welcome. Questions about anything? कोई सवाल है, कोई comment है? So One last thing. just want to ask one thing. The जी. video that we have to make in low, mid, and high situation, that video or that car conversation can be on any topic. Is Could it be on fine? anything. Okay. It could be on anything. Could be on anything. So just to clarify something with us, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको in situations में वीडियो बनाने हैं. आप 2 सिचुएशन में आप रेगुलर वीडियो बनाएंगे, पब्लिक स्पेस में बोलेंगे, वॉलंटरी स्टैमरिंग करेंगे. एक टॉपिक जो होगा कि किसी चीज को डिस्क्राइब कीजिए, किसी इवेंट को एक्सप्लेन कीजिए. एक होगा कि कोई कहानी बताइए, और तीसरा वीडियो जो होगा वो किसी के साथ होगा, या आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं. तीनों वीडियो में वॉलंटरी स्टैमरिंग होगी. But it doesn't mean that you're going to up your level of challenge yet. This idea of coming up with low, mid, and high is only a reflection exercise that we need to write about. That's all. So that when we are ready to practice some techniques starting next week, we have a communication partner that is available. Different communication partners who are available. And it will also give us an insight, or be insight भी होगी, revelations भी होंगी कि why is this harder for me? Why is it easier for me? I think that's all part of, like, reflecting on our experience. That's what we're going to do. Amit sir, if you can just, if you or anyone else also can write it all down in the Telegram group we have, because I forgot to Yes. note down all the tasks that. Sure thing. Sure. I'm going to actually put it into MOOC. The MOOC that we all have access to in the classroom, that might be a little bit easier, because typing in the Telegram group is a little bit hard. Or maybe I'll record maybe I'll record an audio message and send it that way, so you'll have it next week. This is a nice one from Dhruv. For next week, make the following videos in a public place with voluntary stammering, reading in a park, description of a story, description of an event, tell a story, describe something, extended monologue for 5 minutes, and a conversation with someone. That's exactly right. I'll also say one more thing for next week. Let me write this down for next week in reflective journal. Think about 3 to 5 people / places that are low level challenge. Three to 5 places that are mid-level challenge, and 3 to 5 high-level challenge. Okay. So that's the homework for next week. The other thing I think, which I planned to do today, Dr. Sachin and I had planned for you today, but I don't think we had time for it, because I think this is I mean, the point of the TOPG meetings is to process whatever experiences that we've had in the previous week. So I think that
took some time, and that's perfectly fine. Next week, one of the other things we'd want to do is to describe your iceberg. So how do we stammer? कि हमारी हकलाहट देखने में कैसे लगती है, सुनने में कैसे लगती है, और हमारी बॉडी का एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज स्टैमरिंग इज द बॉडीली एक्सपीरियंस, राइट? सो हमारी बॉडी कैसे फील करती है, फिजिकली कहाँ टेंशन हमें फील करते हैं, इंटेलेक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन. वी आर ऑल वेरी बिजी when we stammer. The moment of stammering appears to be a very small glitch to the listener, but we are all very busy. Let's figure out in what ways we are busy. What are we thinking? What are we feeling? How is our body feeling? And what does our stammering look like and sound like? So next week, come prepared to talk about that. We're going to put you in breakouts so that we'll share each other icebergs. मेरा iceberg ऐसा है, तुम्हारा iceberg ऐसा है, and we will try to come up with some things that are common across our icebergs and some things that are unique. So we all know that any phenomena has a universality to it and also uniqueness. So we're going to try to figure out what is universal in our experiences and what is more specific and what is more unique. So those are the three things that we're going to be doing. But I look forward to looking at your videos. Dr. Sachin and I have been going back and forth in terms of commenting on something. He comments on something, I comment on something else. We have to yet come up with a system where everybody gets a comment. So we'll work on that as well. That's the work for next week. Sounds good? Okay, awesome. I need to sign off, guys. So I'll see you next Monday. ओके सर. ओके, थैंक Thank यू you. सर. Thank you. और Bye. यस सर. और सचिन सर की तरफ से एक दो पॉइंट है वो कहना चाहते थे कि एज इज ओके वेरी हैप्पी विद ओके वीडियोस यू ऑल गाइस आर डूइंग. और उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड ही हैज आस्क्ड कि थोड़े लोग दे आर मेकिंग ए वीडियो टू वो ये परफेक्ट. बोले तो वो नेचुरली नहीं, हाँ अगला रहे दे आर वो कोशिश एक कर रहे हैं कि वीडियो कितना अच्छा से अच्छा हो वो करने की कर रहे हैं. कोशिश तो ऐसा ना करें. जो भी आपका नेचुरल हकलाहट आती है वो ओके ना, उसे आने दें. और अगर हकलाहट बिल्कुल भी नहीं आती है तो थोड़ी ओके वॉलंटरी स्टैमरिंग भी आप कर सकते हो. और एक और पॉइंट वो कन्वे करना चाहते कि आप वीडियो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में भी करें. डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओके टॉपिक. जैसे एक्चुअली वही अमित जी ने कहा है सेम. सो दिस आर द पॉइंट. ठीक है फिर. थैंक यू वेरी मच. वी आर ओके वाइंडिंग अप द मीटिंग. सी यू नेक्स्ट ओके मंडे. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. बाय सर.